नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ल एंड आज हम देखने वाले एक वेरी इंटरेस्टिंग बाइक। अगर आप हमारे लॉन्ग टर्म सब्सक्राइबर हैं तो आपको याद होगा कि 2020 में हमने एक फायर फाइटिंग बाइक कवर की थी। अब 2022 आ चुका है एंड ये बाइक अब रोड वर्दी एंड लीगल हो चुकी है। काफ़ी सारे चेंजेस आ गए इस बाइक में जो आपने पहले देखी थी। तो आज हम देखने वाले कि इसके अंदर क्या चेंजेस है। हम आए हैं रोड रेज कस्टम्स में जो वसई में है, जो इस बाइक को कस्टम फैब्रिकेट कर रही है एंड ये डिप्लॉय होने वाली है मुंबई फायर ब्रिगेड से। तो चलिए देखते हैं कि क्या चेंजेस किए गए इसमें। अब जब आप सबसे पहली चीज़ देखेंगे तो ये है इसका रेड पेंट जॉब जो फायर ब्रिगेड अपनी ट्रक्स एंड दूसरी व्हीकल्स में डिप्लॉय करती है। अब इसमें आप देखेंगे तो ये एक फ्लेम का डिकैल आ चुका है एंड जो इसका विंड स्क्रीन है इस पर BMC का एंड मुंबई फायर ब्रिगेड का लोगो दिया गया है। जो पहले आपने देखा था इधर फ्लिकर लाइट्स दी गई थी, बट अब ये फॉग लैम्प्स में चेंज की गई है। इधर आपको एक 2 kg की कैपेसिटी वाला फायर एक्सटिंग्विशर दिया जाएगा। और अब जो हैंडल का एरिया दिया गया है इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए, जैसे कि अब आपको एक वॉकी टॉकी विथ इट्स होल्डर दिया जाएगा जहां आपके जो फायर पर्सनल है वो अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक फ़ोन होल्डर दिया गया है जैसे कि आप अगर नेविगेशन एंड दूसरे पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं। ये जो बटन आप देख रहे हैं ये इसकी फॉग लैम्प्स के लिए दी गई है। अब आपका जो PA सिस्टम आपने पहला दिखा था वो अभी भी अनचेंज रहा गया है। यहाँ पर आप लाइट्स को फंक्शन चेंज कर सकते हैं जैसे कि ब्लिंकिंग एंड फ्लैशिंग है। जो आपका सायरन है ये आप इधर से अगेन चेक कर सकते हैं एंड इसका जो वॉल्यूम है ये भी आप इनकी इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं। अब ये है आपका PA सिस्टम। लेट्स से अगर आपको कोई अनाउंसमेंट करनी हो लोगों को साइड हटने के लिए या दूसरे पर्पसेस के लिए तो ये इस चीज़ में काम आया जाता है। बाकी आपकी एक स्टैंडर्ड सीट दी गई है जहाँ एक पर्सन आराम से कंफर्टेबली बैठ सकता है। एंड ये है आपकी वाटर टैंक। अब पहले जब हमने देखी थी तब उसकी टोटल कैपेसिटी 20 लीटर्स थी, पर अब उसे 16.5 लीटर्स के आसपास किया गया है ताकि ज़्यादा वेट ना रहे इसका। और इधर आपको मिलेगा इसका 20 फीट लॉन्ग का जो होस है आपकी फायर सिस्टम के लिए। ये रहा आपका जो स्प्रिंकलर है जो आप यूज़ करेंगे फायर डाउस करने के लिए। इसमें अब 2 मोड्स आते हैं, एक है मिस्ट एंड एक है जेट। अब इस स्प्रिंकलर को पावर करने के लिए एक 1.5 HP का मोटर यूज़ किया गया है जिसमें 2 लीटर्स का पेट्रोल डाला जाता है और ये मशीन 1 घंटे तक आराम से चलाई जा सकती है। फ्लिकर लाइट्स आपने जो आगे देखी थी अब ये इधर शिफ्ट की गई है। बेसिकली इसमें 20 मोड्स आते हैं जहाँ रेड एंड ब्लू लाइट्स बार बार फ्लिकर की जाती है। अगेन आपके यहाँ आपको एक 16.5 लीटर्स की टैंक दी जाती है, तो टोटल कैपेसिटी आपकी अराउंड 35 लीटर्स की है। ये टैंक को आप एक एक्सटर्नल सोर्स जैसे कि एक फायर हाइड्रेंट पे भी कनेक्ट किया जा सकता है ताकि कांस्टेंट वाटर सप्लाई किया जाए। अगेन आपका जो आगे है ये आपको सायरन सिस्टम दिया गया है एंड ये सेम स्पीकर आप अपने पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब ये बाइक जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक नॉर्मल रॉयल एनफील्ड नहीं है जिसके ऊपर काफ़ी पार्ट्स डाले गए। ये जो सिस्टम्स एंड काफ़ी सारी जो भी मॉडिफिकेशंस की गई है ये गवर्नमेंट के कंप्लायंस के हिसाब से की गई। इस कंप्लायंस को कहा जाता है AS 167 जो गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है सारी सर्विस व्हीकल्स के लिए इन द कंट्री। सो बेसिकली जो भी चेंजेस है ये सब गवर्नमेंट के साथ कंप्लाई करती है और ऑफिशियली गवर्नमेंट इन्हें डिप्लॉय की जाएगी। जो इसकी जो पीछे जो मशीन है जो वेट है वो भी इन्होंने ऐसे तरीके में फैब्रिकेट किए कि आपको लगे नहीं कि आप एक हैवी बाइक चला रहे हैं। दोनों साइड्स इक्वल वेट दिया गया है, पीछे मशीन दी गई है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे बाइक परफेक्टली चलती है एंड आपको कोई स्ट्रेस फील नहीं होगा एडिशनल ओवर ड्राइविंग अ नॉर्मल रॉयल एनफील्ड बाइक। सेकेंडली ये बाइक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए वेयर जहाँ काफ़ी छोटे रोड्स हैं एंड द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स है उन्हें जल्दी पहुँचना होता है। लेट्स से ऐसी सिचुएशंस जहाँ ट्रक्स नहीं पहुँच सकती है कन्वीनियंटली और काफ़ी टाइम ले, वहाँ ये बाइक्स काम आती है जहाँ पर जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स है काफ़ी जल्दी पहुँचे एंड फायर को डाउस करना शुरू कर सके अनटिल एडिशनल फोर्सेस कम इन। फ़िलहाल ये बाइक्स ऑफिशियली मुंबई फायर ब्रिगेड के लिए बनाया गया है एंड थोड़े ही दिनों में 24 बाइक्स है वो डिप्लॉय की जाएगी बॉम्बे फायर ब्रिगेड से एंड आपको अगर आप मुंबई से तो आपको ये देखने मिलेगी। फर्दर डाउन द लाइन ये बाइक्स और स्टेट्स में आपको ज़रूर देखने मिलेगी जैसे कि गोवा एंड दूसरी जगह है जहाँ इनका डिमांड है। अब एक और यूनिक चीज़ जो इस बाइक के बारे में है कि जब इसे रजिस्टर किया जाएगा इसे फायर ब्रिगेड बाइक कहा जाएगा रादर देन द ओरिजिनल बाइक जो है एक रॉयल एनफील्ड। ये एक फर्स्ट है इन इंडिया फॉर एनी बाइक। तो अब हम मिलने वाले मिस्टर गैब्रियल से जिन्होंने ये पूरा प्रोजेक्ट अंडरटेक किया। हाय मिस्टर गैब्रियल। हाय, गुड, नाइस टू मीट यू। सो मिस्टर गैब्रियल रोड रेज कस्टम्स के ओनर है जो काफ़ी कस्टम प्रोजेक्ट्स में अंडरटेक करते हैं। इन्होंने कस्टम कार्स एंड कस्टम बाइक्स दोनों प्रोजेक्ट्स किए एंड ये 10 ईयर्स से इसी इंडस्ट्री में है। तो अब देखते हैं कि मिस्टर गैब्रियल क्या कह रहे हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। So thank you, Motorize, for being coming to my workshop and
having the entire project of mine covering up the entire thing, because it's been a long ride for me and it's been an amazing journey from 2009 till date. Um, in 2009, I was working with a BPO, and suddenly I thought of to start off with the bikes and cars, because I was intrigued the by a channel called Discovery Turbo. So I saw this custom bikes and everything. It blew my mind out, because this never happened in Mumbai or nor in India. So that's what clicked my brain, and I started off in 2009 in a small workshop. I just fit one bike inside, and that's about it. But I would, being an amateur, being a zero knowledge person in in the automobile world, I do not know exactly what to do with the bike and how to start. So I started learning, going to the small garages and sitting with those mechanics and fabricators, learning, and then I came back to my workshop and I tried to uh, do something with it. But I did mistakes. I did many mistakes, but I never repeated the mistakes again. So in one of the episodes, I seen for the Orange County Chopper, which is the company owned by Paul Tetuel Sr. So he designed a nice police bike, and I was like moved with this entire concept. Like, wow, you know, even I want to do something like this. So I started my quest from there in the year 2012, and I started designing one police bike, which is a completely high-tech, never designed before. It had a front and rear camera, CCTV camera. It had an internet connectivity. It had a laptop or a printer, everything that you name that needs to be in a police station. So I called it as a mobile police station. It was a big hit. I have met many of the people in the system, got many appreciation from the media, etc., etc. And then in 2016, I got the first break where Mumbai Police called me. I'm very thankful to Mr. Atul Patil, sir, who is the Additional Commissioner for the Motor Transport Department. He gave me an opportunity working closely with the Law and Order Commissioner, Devin Bharti, sir. And I built about like 475 Mumbai Police bike, which is, I wanted this, I had visioned this actually, and I bring my vision to reality. That is my job, this is what I do. Then after building the police bike, I wanted to upscale and do something more for the community, where I designed a nice detachable boxes called the ambulance bike, where if a patient is stuck up and it cannot be reached, and the first responding vehicle would reach at a time to save life would be the bike. So I designed a nice ambulance bike for the Thane Corporation. Then after that, I wanted to go ahead and do something more for the community, because I know there are situations where a fire truck cannot enter a small lane or in a slum area, you know. And I've been learning, I've been going to slum areas, going around places and checking the lanes and everything. And I realized that we need to have a very concrete and very nicely designed fire brigade bike. So I started my runabout for this thing, meeting firemen and asking them and trying to know exactly what all they want on the bike. So I then started with meeting few official people directly, not knowing that fire bike is not just a bike, it's a complete design package where you cannot go ahead and just design a bike just like that, because it requires a lot of science, it requires a lot of calculation. You need to ensure that the bike center of gravity is maintained. So I started meeting few political connected people, you know, and I was just pushed around. I was not given a concrete answer. Then one fine day, I got a call from the fire department saying that a company has bought one bike. And I was, at that point in time, I was building a fire brigade bike itself in my workshop. So the fire department chief called me and he says, like, no, I have something. My friend has come and he bought a bike. Can you have a look at it? I'm like, now he's my competitor. All right, I cannot, I don't know what to do. So I still went to Bikeala, I met the person, I said, we need to design the whole thing again. So then I realized that
for me to be a part of the fire brigade bike, I need to have certain like a few things that you need to be qualified to be a fire bike builder. Like you need to be a supplier for the fire station. You need to have more than 3 years of relationship with the fire department, which I do not possess because I do not come from the fire brigading department, or I do not provide any kind of fire equipment. So it was a wise thing to go ahead and collaborate with a company called FYR. It's called For Your Rescue. That's in Kolkata. So it's a very mutual collaboration, and I'm the manufacturer for the company, and the parent and the main company is the tender holder. And I managed to build this entire bike and getting it certified and getting it passed from the ARAI, that is the Automotive Research Association of India, that's in Pune. So having said that, this entire bike is designed so perfect that when we went for the demonstration of this bike, the fireman itself came up to me, not one fireman, almost like a dozen of them, and they came up to me and say, "Sir, आपका bike लग रहा है इतना heavy है पीछे से, और and the water weight and the motor weight and the one person weight is more than 110 kg more plus, but I do not feel any kind of strain on my shoulder or on my wrist, and the bike moves very smooth. How is that possible?" I said, that's my job, and that's how I do it, because if you make a bike, you make the bike so perfect. And having said that, this is a rescue bike. The rescue bike should be so perfect that the riders should reach to A point to B point in no time without any kind of stress. So hats off to me itself, I think so. I did a great job, and we managed to get this entire thing. Now we're building about like 24 bikes for Mumbai Fire Station, and looking forward to expand to a different region. तो शुक्रिया गैब्रियल जी आपके टाइम के लिए, हमें इनवाइट करने के लिए, एंड बाइक के बारे में बताने के लिए, एंड ये काफ़ी अच्छा है आपको देखते हुए, एंड ये काफ़ी इंस्पायरिंग है, एंड आशा है कि और नए प्रोजेक्ट्स हमें आपकी तरफ से देखने मिले, तो थैंक यू। तो ये थी आपकी फायर ब्रिगेड बाइक। ये काफ़ी हार्ट वार्मिंग है देखना कि एक पैशन प्रोजेक्ट है जिसे एक रियल वर्किंग मॉडल में चेंज किया गया, एंड आज सोसाइटी को अपलिफ्ट करने एंड हेल्प करने के लिए इसे यूज़ किया गया है। आशा है कि ये बाइक और आपको दूसरे स्टेट्स एंड सिटीज़ में देखने मिले जहां इसका काफ़ी भरपूर यूज़ किया जाएगा एंड इफ़ेक्टिवली भी काम किया जाएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी, एंड कि अगर आपकी सिटी को सेम बाइक डिप्लॉय करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। टिल देन, दिस इज़ फैजल साइनिंग ऑफ, एंड रेव हार्ड एंड रेव फ्री।